Namaskar and welcome to this exciting episode of Sattology, debunking mythology. Sattology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. Mythology actually destroys your identity. Don't use the word mythology for Vedic Shastra or scriptures or even Itihas from Ramayana and Mahabharata or history or Sattology from Ramayana and Mahabharata. If you use the word mythology, you're actually telling the world that your history was not real. So stop using the word mythology. It has become popular in India too. The mythologists in India, they proudly say, I'm a mythologist. If you're a mythologist, why should I listen to you? Question. So be a mythologist if you want to be someone. I have a very special guest and she'll talk about Surya today. So let us welcome Dr. Aparna Dhir Khandelwal. Namaste, Aditya ji. Namaste. So there is a no bigger truth in the world as sun, isn't it? True, exactly. See it every morning, and there's a joke also. The night happens because there is no sun, and because there is no sun, therefore there is no night. Therefore the sun go disappear. I don't know, some people. I don't know what kind of philosophers we have nowadays. So, but sun has always inspired good activities, good things. Most of the thefts usually happen during the when the sun has not risen. Most of the thefts and most of the nishachar or people who roam around is when the sun has set. And for some people, that's a day. So I'll give you the platform and you can tell us all about it today. Oh, it's too much. It's too much. It's too vast to tell everything, even in one presentation. I think this will require at least 10 or around 10 subsequent lectures on this Oh, particular theme. okay. So so in so what is the importance of sun from the astrology point of view or astronomy point of view? That's in my presentation. Okay. So we'll get started. No? Ji. As you can see that today the topic I am taking in my presentation is etymological explanation of sun. Because we all know about sun, we all talk about sun, we all have different names about sun or yeah of sun, but what it is really as per the etymological meaning, because only the etymology decides what it stands for. So today I have taken that topic only to start this particular theme, and that is the biggest theme in, I think, in every field of knowledge, whether if it is a philosophy or a Vedas or any other field. Sun is always the most talked about topic. So to start with, as he asked, so as Aditya ji just asked me the question uh, for astrology or the astronomers, how does sun, how do they feel about sun? So we will take this thing in the within the presentation only. So to start with, if you have been to my previous talks, you have seen that I have talked about this much in a few of my presentations. Like, I'm not describing this again and again, but still, I am just giving you an idea to start to know from where I have started. I have started with the word samvatsar, which I have already discussed that this is the biggest time unit as per the Shatvat Brahman and the Petri Brahman. See, what I am doing in my presentations, my main focus is usually Shatpat Brahman, but I'm also taking few of the Yajurvedic text that correlates with the Shatpat Brahman and also the other Vedic studies. So today, what I'm saying that I'm going to explain etymological explanation of sun. It is mainly as per the Brahmins of Yajurveda only, how they feel, how they are connected to this particular topic. So I have already explained Samvatsar or the year, you can say, on the basis of seasons, months,
then fortnights, then full moon, new moon, then day and night, and finally the constellations. This have been already explained. Then we have, in our last presentation, we have already discussed about a few other units of time which we are using in our day-to-day life, or we can say the practical aspects of time, or we can say in Hindi like व्यवहारिक पक्ष, जो हम कहें काल का जो व्यवहारिक पक्ष है, जो हम दिन रात एक साथ एक दूसरे के लिए बोलते हैं, ये कल होगा, ये आज होगा, ये आज सुबह होगा, शाम को होगा, दोपहर को होगा, प्रतिदिन होगा। तो ये जो जितने भी शब्द हैं, ये सारे के सारे काल के ही जो है अंग हैं। कुछ बड़े अंग हैं, कुछ छोटे अंग हैं, इतना समझ आता है। So from all this description which we have already discussed in our previous presentations, we have come to know about this thing. Now we can say that we are totally aware that knowledge of time was there during the period of this during the period of Brahman, Shatpat Brahman and the Tetri Brahman. During the Yajurvediya Brahmanas. So knowledge of time was there. And even if any one of you have seen any other show on this platform, so you must have you must be have good knowledge about this thing, that the whole creation process, when creation of universe take place, there was nothing, but time was still there. So time is an important aspect in our life, starting from the very beginning, starting from the creation process itself. So, as far as these Brahmanas are concerned, these books of which are related to Yajurveda, I'm talking about those only. So, knowledge of time was very much there in that period. So, this much already done. Now, what we have understood so far, we have understood that we have now it is well known that all the smallest units of time were known, all the biggest units of time were known. Though we have explained in detail only the Samvatsar part or the other basic practical time units, but there are many other time units which are yet to be taken in subsequent lectures. But this much have been clear that both of these types of time units were very much known to the Vedic rishis. Why they have known all these kind of time units? That's the point. That's because the orientation of the orientation of the life during the Brahminical period was related to the sacrifices, was related to the rituals. So, because people were in that society used to perform lots of ritualistic activities, lots of sacrifices, as mentioned in the Brahmins of Yajurveda. So they should be very well aware of all the time units. So this much we have already understood and talked about. So starting with the Samvatsar till the Muhurt, this much is there in this much description is there in the Yajurvediya Brahmanas, and you can see which is the biggest one and which is the smallest one. This is also well known fact. Now the point, when Rishi is aware that this is the smallest one, this is the biggest unit, but what is the reason? उसका कारण क्या था? क्यों ऐसा हो रहा था? कैसे उनको पता चला कि अभी ऋतुएं बदल रही हैं, आज मास में परिवर्तन हो रहा है, कैसे मंथ बदल रहे हैं, एक फोर्टनाइट बदल गया, एक तिथि बदल गई, एक दिन बदल गया, रात हो गई, ये सब चीजों का कारण क्या था? What was the reason of all these happenings? Who is the main reason or the cause? ये भी उन्होंने सोचा. Then secondly, visibility of change. Like just Aditya ji just said in the starting that sun ही है, जो सूर्य है वही सबसे बड़ी ट्रुथ है, और कुछ हो ना हो तो ट्रुथ तो है, लेकिन ट्रुथ किस कारण से है? बिकॉज वही है जो हमें निरंतर परिवर्तन दिखा रही है. चेंज द चेंज है, जो चेंज विजिबल हो रहा है डे टू डे लाइफ में, चेंज हमें दिख रहा है. वेदर इन द केस ऑफ आवर एज, चाहे हमारी एज घट रही है या हम कहीं दूसरी चीजों में भी हमारी बहुत से आसपास जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं वो सब हो रहे हैं,
बहुत सारे एग्रीकल्चरल चेंजेस हो रहे हैं, काफी चीजें हम देखते हैं। तो दैट जो चेंज है, तो उसकी जो विजिबिलिटी है, उसका क्या कारण है, who is responsible for that visibility of change? Then again the question is the continuity. लगातार हो रहा है, जो भी चेंज हो रहा है वो लगातार हो रहा है। लगातार कैसे? अभी अगर नाउ द समर सीजन इज गोइंग ऑन, देन वी हैव द rainy season, then we have the autumn season. So this is how the process is still going on, though we are in the situation where we are facing the changes in our day to day lives, but still there is a continuity. That continuity prevails in everywhere, in whatever task we are doing, whatever thinking we are having, in everywhere the continuity is there. So again, also the last reason I am giving, नियमित रूप से हो रहा है, रेगुलरिटी है, देर इज अ फ्रीक्वेंट अपेयरेंसेस है उसकी, जो फ्रीक्वेंटली हम देख रहे हैं। ऑर्डर है, देर इज अ सीक्वेंस, कि आज अभी है, फिर उसके बाद कल भी होगा, फिर ऐसे इस तरह से जो हम देख रहे हैं। इन सब का कारण मतलब कि जितने भी टाइम यूनिट्स हैं, देर इज वन रीजन टू इट, देर इज समवन हु इज द इन चार्ज ऑफ ऑल द चेंजेस, there is someone who prevails or all the whole of the continuous process, and the process which is continuous in nature, at the same time it is in a sequential uh, order also. There is a sequence. So who is responsible? None other than sun, जिसको हम बहुत डेली देखते हैं। सुनने में बहुत बेसिक लगता है, बट लेकिन अगर हम कभी इस तरह से देखें कि अगर सन ही ना हो तो, सन, if there is no sun then what will happen, इस तरह से अगर हम मन में सोचें, तब हमें पता चलता है कि all these जो characteristics which I have just talked about, बेसिकली ये हमारे लाइफ की फिलोसफी भी है, जो कि बाद में फिलोसफर्स ने अपने अपने ढंग से, अपने अपने तरीके से, दे हैव रियलाइज्ड इट एंड दे हैव कंक्लूडेड इट इन देयर राइटिंग्स. So moving ahead, we are talking about basically in the astronomical or the time units part of it, not majorly the philosophical part. So talking about the sun, as Aditya ji just asked, कि वो एस्ट्रोलॉजी से या एस्ट्रोनॉमी उससे रिलेटेड है या कैसा है, देखा जाए तो इट इज व्हेन वी टॉक अबाउट सन या व्हेन वी टेक द सब्जेक्ट सन, if our mind mainly focus on 2 points, either is it's a subject of for the astronomers or it is a subject for the astrologers. But अगर हम ध्यान से देखें तो both the astronomers or the astrologers, they came late into existence. उससे पहले क्या था? उससे पहले भी ये उतना ही आकर्षक विषय था. इट इज सन जो था, इट इज ऑलवेज एन अट्रैक्टिव बीइंग कह लीजिए, एलिमेंट कह लीजिए, फॉर एवरीवन. सो व्हाई नॉट फॉर द वैदिक ऋषि? ऑफ कोर्स इट इज फॉर द वैदिक ऋषि ऑल्सो. सो इट इज एन अट्रैक्टिव थिंग फॉर द अट्रैक्टिव एनवायरमेंटल, और जो अपने आप होने वाली एक प्राकृतिक, जिसको हम कहेंगे इस तरह की होने वाली खुद ही ऐसी एक्टिविटी है जिसने अट्रैक्ट किया वैदिक ऋषि को भी. तो एस्ट्रोनॉमर्स और एस्ट्रोलॉजी जो है वो बाद की फील्ड्स हैं. एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी इज लेटर ऑन, इज द फील्ड ऑफ, आर द फील्ड्स ऑफ लेटर पीरियड. बट for the Vedic Rishi, this happening, this natural activity, this natural phenomena is the prime most or the foremost activity of the sky, of the universe, which takes their focus on it. So this is how we can say, जब उन्होंने सन को देखा, जब उन्होंने सबसे पहले सन को रियलाइज किया, देखा, कुछ जिस तरह से अभी हमने बात की, संवत्सर होता है, अयन है, ऋतु है, सीजन, मंथ है, ये जो हम बात कर रहे हैं, क्या ये सब पहले भी ऐसी थी? ये तो वैदिक ऋषि ने बाद में उनको डेवलप किया. तभी हमने वैदिक ऋषियों को कभी खगोल शास्त्रीय देखा, जिसको हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं, एंड कभी हमने उनको एस्ट्रोलॉजर्स के रूप में देखा, जिसको हम ज्योतिर्विद कहते हैं. तो हम कह सकते हैं कि उनका ध्यान इस पर गया. कैसे गया? उन्होंने जब देखा सन के अंदर इस तरह की डेली एक्टिविटीज हो रही है, डेली वो दिख रहा है, डेली सनराइज है, डेली सनसेट है, और बहुत सारे परिवर्तन, बहुत सारे चेंजेस भी हैं, तो उन्होंने उसके अंदर क्या किया? उन्होंने उसके अंदर
उनको उस सन को एक डेटी के रूप में मान लिया. They consider sun as a god, or you can say a deity, और हिंदी में कहें तो देवता के रूप में मान लिया, देवता के रूप में कल्पना की और उसके प्रभाव को जानने की कोशिश की. तो anyone who is interested in knowing the Vedic studies or the Vedic literature, so they may have gone through these facts that जितना भी सन रिलेटेड आपको डेटा दिखता है वैदिक स्क्रिप्चर्स में, everything is related to the wide study of the Vedic ऋषि, in which उन्होंने उसे एक देवता मानकर, नेचुरल फिनोमिना मानकर, क्योंकि जितने भी वैदिक हमारे यहाँ वैदिक ऋषियों ने वैदिक स्क्रिप्चर्स में जितने भी नेचुरल हैपनिंग्स हमारे सामने हो रही थी वो सभी को देवी देवता माना है. ये बाद में पुराणों में आकर वो दूसरे तरह से हमें नजर आते हैं, बट बेसिकली जितने नेचुरल फोर्सेस हैं, ऑल नेचुरल फोर्सेस आर नथिंग बट दी Vedic deities only. So they have studied clearly all the facts related to sun. जब उन्होंने जाना तब उन्होंने सन, जो आज हम वर्ड यूज कर रहे हैं, हम बार बार सन कहते हैं, उन्होंने नाम दिया सूर्य और आदित्य, या सूर्य कहा या आदित्य कहा. तो आगे से जब भी मैं सन पे whenever I will going to present on sun, I will better use the word terms Surya or Aditya, because anyone who have studied the Vedas, they are very much familiar with the word Aditya or the Surya. सूर्य तो हम अपने डेली उसमें भी बोलते हैं, बट आदित्य इज नॉट कॉमनली यूज वर्ड इन टुडेज era. So now our main focus is what is Surya and what is Aditya and how we are connected to it. तो सूर्य कहें या आदित्य, प्रश्न ये whether we have to use the sun or the word Aditya. First of all, in the Brahmins of Yajurveda, or you can say mainly in the Yajurveda also, or in the whole Vedic literature, it is these words, both Surya and Aditya, they are known to be Devtavachi naam hai ye, Devtavachak hai. They are basically used as for the deities. ये देवताओं के रूप में इनके नाम इस तरह से नाम आता है. साथ ही सूर्य एवं आदित्य जो है एक दूसरे के प्रायवाची के सिनोनिम्स के रूप में, एक दूसरे के सिनोनिम के रूप में ये दे आर बीइंग यूज्ड एज सिनोनिम्स टू ईच अदर. You can say Surya, you can say Aditya, both resembles the same thing. So now important thing is कि जब हम whenever we study, we may find these words in starting from the Rig Veda, that is the Surya or the Aditya. But when we talk about the Stuti Parak mantra hai, you all know that in the Rig Veda, starting from the Rig Veda, we have lots of prayers, we have lots of hymns or the mantras in the praise of various deities. But when we talk about the Aditya, we don't find any such mantra जो कि उनकी prayer में हो. We find the word Aditya, but we don't find the word कि praising words हो, कि prayer हो आदित्य से. ऐसा well researched fact है, and it is given in this book, which is based on the Surya Devta only. So, लेकिन when we talk about the यजुर्वेद में क्या? यजुर्वेद में आदित्य के लिए बहुत से मंत्र कहे गए. There are lots of prayers which are dedicated to the god, Lord, deity Aditya. And also the words Aditya and the Surya are taken into consideration in the one stanza or the one mantra itself. So एक साथ भी इनका प्रयोग देखने को मिलता है. तो जब हम इस तरह से बात करते हैं, तो चाहे वहां ऋषि सूर्य भी बोले, चाहे वो ऋषि वहां आदित्य भी बोले, वो एक ही है. इसी बात को वो डिनोट कर रहे हैं. यहाँ इस प्रेजेंटेशन को करने का मतलब यही है कि हमें सूर्य का स्टार्ट कहाँ से हुआ, आदित्य का स्टार्ट कहाँ से हुआ, इसको जानना सबसे पहले जरूरी है. हम बहुत सी प्रेजेंटेशंस देखते हैं, बट वी hardly know the start of these words. We directly jump into the content of the biggest time units or the जो astrological facts हैं, हम उस पे सीधा चले जाते हैं. But one should know from where all these things started. So, talking about just now, I have said कि आदित्य और सूर्य जो है वो एक साथ उसका कथन किया गया है यजुर्वेद में.
अगर अब हम इस बात को देखें तो कहाँ किया गया है, अगर हम सबसे पहले बात करें तो, और अगर हम ब्राह्मणों के केस में बात करें तो शतपथ ब्राह्मण इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग, वेयर सन एंड आदित्य इज टेकन into consideration at one place only. It says असो वा आदित्य सूर्य, यह जो आदित्य है वही सूर्य है। तो ये इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन खुद हमें शतपथ ब्राह्मण से ही मिलता है, जो कि इस बात को बताता है। और इससे जो मैंने अभी बताया कि आदित्य और सूर्य अलग अलग नहीं, एक ही है, हमें ये बात एकदम ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि जब हम आगे बहुत सारा व्हेन वी ट्राई टू स्टडी मोर अबाउट दीज Aditya and Surya concept, we will find there are lots of other names also which are being used for these. But the popular ones are the Aditya and the Surya. Now talking about the Surya, अगर हम देखें सूर्य शब्द को ही अगर हम समझे तो वो क्या है, देर इज वन, हम नरेशन कहेंगे, देर इज वन नरेशन और दी एक छोटा सा एक स्टेंजा है जिसके अंदर इट इज बीइंग एक्सप्लेन कि हाउ दिस सूर्य शब्द जो है बना कैसे है। प्रजापति ने जब इंद्र को बनाया तब अन्य देवताओं ने उसे मरण रहित सूर्य सुंदर वीर्य से संपन्न जगत के पालक कहा। तो जो इंद्र है, क्योंकि वन मस्ट नो दैट इंद्र, विष्णु, दीज आर ऑल्सो दी सिनोनिम्स ऑफ द नेम्स, अदर नेम्स फॉर आदित्य और सूर्य। सो हियर इट इज बीइंग told through the name Indra only. But why we are using this name? This I will explain in later presentations. प्रजापति ने जब इंद्र को बनाया, तो जब इंद्र, when Prajapati is the creator of the universe, when he is being created, he is creating the god Indra. तो उन्होंने उसे कैसा बनाया, सुंदर वीर्य से संपन्न बनाया, बहुत सर्वशक्तिमान का बनाया उन्हें, जो कि जगत के पालक भी हैं, इस तरह से मान सकते हैं। तो यहाँ जो सुवीर्य शब्द है, सुवीर्य इज द एटिमोलॉजी विच इज बीइंग ड्रिवन फ्रॉम द वर्ड सूर्य, उसी से बना सूर्य शब्द है। एंड दिस इज नॉट दिस इज नॉट बीइंग टोल्ड बाय मी, इट इज बीइंग रेफर्ड थ्रू द कंटेंट ऑफ द तैत्तिरीय ब्राह्मण, विच सेज सुवीर्यो मर्याः यथा गोपायत इति तत् सूर्य से सूर्यत्वम। यही सूर्य का सूर्यत्वम है कि जो हमने अभी लाइन में यहाँ हिंदी में एक्सप्लेन किया। सो दिस इज हाउ वी कैन से वीरता के अर्थ में सूर्य मिलता है। तो जहां भी सूर्य शब्द आ रहा है, आप उसे वीरता के अर्थ में आराम से ले सकते हैं। दूसरी चीज ये भी है, अब ये किस तरह की वीरता है, क्या ऐसा क्या हो रहा है, अब इसको जब हम धीरे धीरे बहुत सारे व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड वेरियस contents related to Surya, we will understand why such term वीरता, और जो एक हम शूरवीरता की भी बात करते हैं, वो सूर्य के लिए क्यों आया है। तो इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया है। एक बात यहाँ पर और मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी, देर इज अ बुक कॉल्ड वैदिक देवता उद्भव और विकास बाय द ऑथर प्रोफेसर गयाचरण त्रिपाठी जी। He said that in the Shatpat Brahman, or mainly in the Shatpat Brahman, you can say Aditya word is being used 80%, and the Surya word is being used only the 20%. So we can say that though in the Rig Veda Surya word was there, but the Aditya word became popular from the Yajurveda only, basically, mainly, क्योंकि आदित्य के बारे में ही ज्यादा चर्चा जो मिलती है वो यजुर्वेद में मिलती है। अब आदित्य की बात करें, अगर हम इसको समझें, आदित्य के बारे में क्या डेरिवेशंस मिलती है, व्हाट दीज एटिमोलॉजीज आर फ्रॉम द ब्राह्मण्स ऑफ यजुर्वेदा, नन ऑफ अदर बुक इज बीइंग कंसीडर्ड हियर। सो आदित्य क्यों कहते हैं, क्योंकि सूर्य ने चंद्रमा की आभा ले ली है। अब ये साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है विच इज बीइंग एक्सप्लेन बाय द ऋषि, जो आप देख भी सकते हैं, इट इज फ्रॉम दी शतपथ ब्राह्मण ओनली। भामेव चंद्रमस आदत यह एवं वेद तद्यात् आदतः तस्मात् आदित्य। तो जो आदित्य है उन्होंने चंद्रमा की आभा ले ली है, और दिस इज यू कैन कंसिडर एज अ साइंटिफिक प्रिंसिपल जो कि हमें दिया गया है। देन वी हैव संपूर्ण जगत को ग्रहण करते हुए चलते हैं। जो आदित्य है वो कैसा है, संपूर्ण जगत को ग्रहण करता हुआ, मतलब कि जो भी सराउंडिंग्स है, वॉट एवर दी एनवायरमेंट अराउंड अस, वॉट एवर जो हमें इसमें
इस थ्रू आउट द वर्ल्ड जो नजर आ रहा है, वॉट एवर इज बींग विजिबल, वॉट एवर इज बींग देयर, एवरीथिंग इज बींग कवर्ड थ्रू द सन ओनली, थ्रू द आदित्य ओनली. एंड देन वी हैव नक्षत्रों के शत्रत्व को ले लेता है. अगेन एवरी दिस इज अ साइंटिफिक प्रिंसिपल गिवन बाय द वैदिक ऋषि. जो ये आदित्य है, ये भी शतपथ ब्राह्मण के सेकेंड चैप्टर का, दिस इज फ्रॉम देयर ओनली, कि जो जितने जब व्हेन सन गेट राइजेस, इट टेक्स अवे ऑल दी जो प्रकाश जिसको हम कहते हैं, जो उसका इल्यूमिनरी इफेक्ट है, किसका, कॉन्स्टिलेशंस का, मून का, वो सारा का सारा ले लेता है सन. तो ये एक तरह का साइंटिफिक प्रिंसिपल है जो कि उन्होंने, जो मैंने अभी बताया था कि ऋषि ने सूर्य को देखकर उसके अंदर पहले तो देवता की कल्पना की, एंड सेकेंडली उन्होंने उसके बारे में, उसके प्रभाव को जाना. तो दीज आर नथिंग बट दी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स गिवन बाय द वैदिक ऋषि is in the form of etymological derivations of the word Aditya or the Surya. Now, Aditya is nothing but वो अदिति के ही पुत्र के रूप में कहे गए हैं. ये तो हमें ऋग्वेद से भी मिलता है फैक्ट, इसीलिए आदित्य कहा जाता है. ये एक्सप्लेनेशन भी आगे के लेक्चर्स में इसको सुन सकते हैं. Then there is one another story which is like this. प्रजापति रूपी अश्व, जो प्रजापति हैं वो क्रिएटर माने जाते हैं यूनिवर्स के. अश्व के द्वारा युद्ध में विजय प्राप्त करके असुरों के लोकों को प्राप्त कर निवास योग्य बनाया, अतः अश्व का नाम आदित्य हुआ. अभी इसको अगर फिलोसफिकली समझें तो यहाँ पहले तो उन्होंने कहा प्रजापति रूपी अश्व, जो प्रजापति है, जो क्रिएटर है, वो एक अश्व के रूप में है. जब वो आते हैं तो असुर के लोग का मतलब यहाँ क्या हो रहा है, एक तरह से जो डार्कनेस है उसको हटा पूरा का पूरा प्राप्त कर लेते हैं, मतलब अपने अंदर अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, एंड देन उसको अपने अकॉर्डिंगली बना लेते हैं. और इस तरह से वो जो अश्व है वो कोई और नहीं, वो खास वो खुद ही आदित्य है. तो अब इसको रिलेट करें तो प्रजापति अगर अश्व है और अश्व अगर आदित्य है, तो इसका मतलब क्रिएटर कौन है, सन और दी आदित्य. तो इस तरह से भी इसको समझा जा सकता है. और अगर हम अश्व के रूप में बात करें तो अथर्ववेद में भी हमें मिलता है कालो अश्व वहति करके, कि ये जो काल है वो एक तरह से जो घोड़े हैं उनके द्वारा निरंतर चल रहा है, ऐसा करके. तो ये जो है कहीं ना कहीं ये सब टर्मिनोलॉजीज जो है दे आर बीइंग रिलेटेड टू ईच अदर फ्रॉम दी संगीतास टू दी ब्राह्मणास. एंड इसका अर्थ अगर हम देखें, अगर सूर्य इज इन दी अर्थ ऑफ वीरता, देन आदित्य इज देयर इज द वर्ड विच इज फॉर दी प्राप्त करने के अर्थ में, टू हैव, जिसको हम कह सकते हैं प्राप्त करने के अर्थ में आदित्य वर्ड हमें मिलता है. So, agar if we go through all these principles, all these quotations which I just mentioned, like सूर्य ने चंद्रमा की आभा ले ली, संपूर्ण जगत को वो ग्रहण करते हुए चलते हैं. नक्षत्रों का भी नक्षत्रों में अगर आप नक्षत्र जब मैं कराऊंगी तो आप देखेंगे नक्षत्र जो शब्द है, इट इज एक्चुअली उसका एटिमोलॉजी यही है, जो शत्र नहीं है दैट इज नक्षत्र, मतलब जिनके अंदर अपनी कोई शक्ति नहीं है दैट इज नक्षत्र. तो अपनी शक्ति, उनकी शक्ति कहाँ गई, उनकी शक्ति ले ली आदित्य ने. तो शत्रत्व का मतलब यहाँ पर यही है. तो शक्ति से मतलब यहाँ पर वही है कि उनकी अपनी कोई चमक नहीं है. इसी तरह सूर्य चंद्रमा की भी अपनी कोई चमक नहीं है. तो ये जो है ये सब कुछ कौन ले लेता है, आदित्य ले लेता है. तो इस तरह से जब हम देखेंगे इस पूरे उसको, यही सब डेरिवेशंस जो है, यही सब एटिमोलॉजिकल जो है, एटिमोलॉजिकल all these representations are from the Brahmins of Yajurveda, and they have given this whole idea, the concept of the Aditya and Surya in this way, in a very journal form, but they are good scientific principles to have further research. Now this can be related to the Yaskacharya जो उनका निरुक्त ग्रंथ है उसके साथ भी हम इसे रिलेट कर सकते हैं. लाइक आदित्य कस्मात आदित्य, आदित्य से आदित्य बना है, ये ध्यान रखना है. रसना आदते, देन उसके बाद भासम ज्योतिषाम दीप्तो भासेति वा आदित्य पुत्र इति वा. अर्थात आदित्य जो है वो कुछ और नहीं है, आदित्य रसानाम आदानम करोति, जो आदित्य है वो रसों को ग्रहण करता है, प्राप्त करता है, इसीलिए आदित्य है. रस कौन से, जितने भी ये हम जैसे हम कहते हैं नेचुरल सिक्रीशंस जो हो रहे हैं एनवायरमेंट में, वो सारा जो प्रोसेस है
वही सारा यहाँ पर इसको बताया गया है एक तरह से। आदित्य है नक्षत्राणाम कांतिम अपहरति, नक्षत्रों की कांति का अपहरण कर लेता है आदित्य, या उसको ले लेता है, अगेन प्राप्त करने के अर्थ में। आदित्य स्वकांताय आभया सर्वतः दीप्तो भवति, अपनी कांति से, अपनी आभा से ही सब जगह वो दीप्तिमान दिखाई देता है, होता है। आदित्य अदिति का पुत्र है। तो इस तरह से व्हेन वी अंडरस्टैंड these facts related to the related to Aditya and Surya in the etymological manner, we can understand the scientific principles. We can come to certain conclusions, and this will actually help us in understanding the various concepts related to given in the Vedic scriptures and the later books of knowledge. And there are lot many words related to the Aditya and Surya other than these. So we will take those things, those words, those other than etymological words, the other, you can say the adjectives of Surya or the Aditya in next presentation. So one of the important about the time calculation and all based on sun, because the I put in my new book actually on Yoga Sutra, which is there. So the Anu, Parmanu, Trisarenu, I'm reading from my book, Truti, Veda. So Truti is considered to be 1 by 1687.5 seconds, such a small division of time, and all based on Surya, because sun energizes all the atoms, and that's how they move and merge. And Aditya and I like the word you use, Surya and Aditya. And Truti, then Veda, which is 100 Truti. So it comes out to be exactly like Murta. And Murta comes out to be uh, like 6 or 7 Murta or Danda. Or Murta is like a merging of 2 Danda. One Danda is 1822.5 seconds. So it exactly comes out to be 3 hours, 3 minutes. 3 hours, 3 minutes, 03 minutes, which is exactly a day or a night. Such is the accurate calculation in Veda. And this is subatomic because atom, eh, you know, people say atom as Anu, but most of the Western world deals with atom as Trisarenu or Truti. This is the atom definition actually, which is also, but Vedic calculation goes even before that. Starts with Anu, Parmanu, Trisarenu, Truti, and Veda. So we are really talking about subatomic calculation. And people may ask me why, how they were able to calculate this, and what was the basis of calculation. And I think I answer is all yoga, because the you cannot visualize such small minutest details through any microscope, because microscope you cannot even say Trisrenu clearly. And so Trisrenu is 3 atoms and 3 parmanu together, which is 6 atoms, 6 anu. So the Vedic calculation is always subatomic, and that's why they were able to observe the timing very accurately. So when Bhishma says, I want to move in this Murta, that means even while he's lying down, his mind is fully active. And he is actually calculating subatomic. And he did not have to see any watch, nothing. You're seeing the sun's movement and Sandhya movement. And based on Sandhya, you can easily find out. So the moment you have knowledge, you don't need even a watch. So my iWatch is a waste now. So tell me one thing. Can this time calculation, which you just showed the presentation on Surya, and we'll make it a 10 part, like you said, the can this time calculation be practiced today? Are we that much focused? You just said it is based on the yoga padati only, not through the microscopic lens. So if we are practicing such yoga, or we are the yogis, so we can calculate that calculation through mind. Yeah, I mean, it's not possible. That means so what you say in Kali Yuga, our mind capacity is increasing or decreasing now? Intellectual capacity. There are a lot of distractions. I don't think so we are
we are elevating in that way. Yeah, absolutely. When people say we are becoming more modern, now modern is relative to the 16th century Europe, not today's. But if you calculate from our Rishi Muni point of view, then we are actually going down in intellectual capacity. We need so many tools. Like if I don't have anything on my calendar, I'm done. Like I cannot see anything. And so actually our intellectual capacity is going down day by day. And NASA is the third time their moon rocket has been stopped. Third time. So whether they went in, so it's in 2022. If 2022 they're having so much difficulty, what was in 1969? I'm just this question is there. Uh, I mean, it's a natural thing. Like Artemis is crossed three times, and I'm a very close observant of space launches. And I live in California, so we have Long Island. We have very good rocket launches stations nearby. SpaceX is nearby, and I keep watching them. It's not there. It's not there. I mean, we once in a while we see a rocket going out SpaceX and crosses, and we can see in the sky. There's a big show in San Diego whenever they launch a rocket. But I'm just surprised that why the third time the space launch has been stopped by the NASA for the moon. And what about 1969? Again, question comes back. So all the conspiracy theorists, you can bombard me, kill me, or whatever you want to type on the social media. That's fine with me. But question yourself: if you can't do it today so many times, and even though I really admire the vertical return of the rocket cylinders, which cylinders they come and they land on their own, all the parts not dropping off in somebody's home in some Africa or Asia. So I'm happy with that. That is, they're coming back to California so that we can preserve and reuse them again. Otherwise, they would drop it over some country which they don't know. That's why they used to do that. So some people in Africa would think that, oh, what is this American gift coming back? Destructive American gift. But anyway, so thank you so much for the presentation, and just food for thought that was that in our Yoga Paddhati and our Veda and Purana is very clearly written, no other person from another planet can come to Earth on their own. So UFOs and everything that come, these are all different living beings which are coming, but they cannot affect the life on Earth, including Rakshas. That has been forbidden in Kali Yuga. But in Treta Yuga, Dwapar Yuga, and other Sat Yuga, this travel was very normal. And it was not considered very surprising also. But now it has been there. So don't be surprised on UFOs. Don't be surprised on any such thing. Just understand nobody's going to take your food away from your table. One thing I like to mention here that when I started this presentation, working on this presentation, I was thinking कि आज का जो जैसे अभी आपने कलयुग के लिए बात की, तो आज के जो हमारे बिल्कुल टोडलर्स तो नहीं कहेंगे, किड कह दीजिए, सन तो चलिए सबको समझ आ रहा है क्योंकि उनको सोलर सिस्टम सिखा रहे हैं, बट आदित्य बोल दीजिए एक बारी, बिल्कुल तो क्या उनका रिएक्शन होगा? तो अब आप किड से भी ऊपर आ जाइए, 11 year old, 12 year old, even in the Indian context I'm saying, आदित्य बोल दीजिए, तो बच्चे क्या समझते हैं? Aditya Varnam Tapasa Parastad. People don't know actually, and and also some people they put funny names also. Chia, Fia. These are the names put on children in Hindu families, and they बिल्कुल बिल्कुल and Ardu, Ardam. I've, I've I've heard such names and so unique names that even Americans will be surprised. Is it Greek or French or it is German or American? नहीं, If you तो don't, उसके बाद उनसे मीनिंग पूछिए तो वो कहेंगे इट इज रिलेटेड टू लॉर्ड शिवा, इट इज वन ऑफ द नेम ऑफ सन, इट इज वन ऑफ द, मतलब अभी जो हम लोग हैं जो कि वैदिक स्क्रिप्चर्स का कुछ थोड़ा मोटा कुछ 10% नॉलेज लेके शायद बैठे होंगे, तो हम लोग भी एक बार बुक को हमें भी उठाना पड़ जाएगा कि ये आदित्य का नाम कब था। अभी नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में आएंगे आदित्य सारे। exactly. Like so many funny names are there, and everyone connects it to some Devi Devta. And I have not found it. Like somebody put the name Shura. Now Shura, now Shura,
Shura can mean anything. Shur can mean anything. Shur actually means pinpoint. Shur Veer means focused warrior. But Shura, I have no idea. This is also a लेकिन name of. अगर वेद में देखे तो वो सुरा, सुरापान, वो सब, फिर वो क्या है? हाँ, सुरा वो अलग हो गया। सुर और सुर और असुर तो अलग हो गए। लेकिन असुर नाम किसी का नहीं देखा मैंने अभी तक। हो जाएगा, वो भी कलयुग है। मैंने असुर नाम नहीं देखा किसी का, तो इट इज वेरी सरप्राइजिंग. But anyway, thank you. And I did meet a guy whose name was Duryodhan, so I will accept it. I did meet a person whose name is Duryodhan, and so it was surprising for me. And Ravan I have not seen yet, so I'll see it one day. Somebody will put the name Ravan also. So thank you for all of you for joining, and for do share, like, and subscribe to our channel, and share as widely as possible. We love this series. Namaste.